Welcome everyone. This is Drashti and I am part of the business partnership team at Dhan. Thank you for taking out your time and joining us for today's webinar. We'll wait for 2-3 minutes for everyone to join in. Okay, let's get started. Welcome to today's webinar by Alok Jain sir. He will be taking us through basics of momentum investing. So just a little housekeeping before we start. If you have any questions during the session, please type them in the question box or you could bring them up at the end of the session. I'll just give you a little brief about Alok Jain. Alok's journey in the market started in his setting up one of the first national stock exchange corporate membership in New Delhi in 1996. For 2 decades, he served institutional, corporate, HNI, and thousands of retail clients, and along the way developed a keen sense of systematic rule-based investing system and technical trading. On completing 20 years of the business in 2016, Alok decided to roll out the same strategies that he was running for his own money on for others, which led to the creation of this DIY model-based portfolios under the banner of weekend investing that required only 2-minute weekly intervention by the user. As I said earlier, Alok sir would be taking us through the basics of momentum investing. Over to you, Alok sir. I'm getting a message that the host has stopped the video. So please start the video.
Just give me a sec. I'll again give you the access. Alok sir, you could share the screen. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir, we are able to screen. All right. So good evening, friends. My name is Alok Jain. I represent Weekend Investing, a research company here. We are very happy to do this collaboration with Dhan and promote momentum investing, which is a very still a very young, a field of research into investing, and not too many people know about it. And hence this entire exercise to make people familiar with what is momentum investing, maybe even tell you basics about how to create a momentum investing strategies in future videos. So let's start here. Just let me sort of give you a very simplistic view about momentum, and I've been told that I can do this in English also, so I'll do it in Hindi as well in the middle. So the idea of momentum is that it's a sustained increase in price or a sustained decrease in price. तो रेट प्राइस आपका अगर बढ़ता जा रहा है या प्राइस आपका गिरता चला जा रहा है तो उसको मोमेंटम कहते हैं. बेसिकली दिस इज द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन कि व्हाट इज मोमेंटम. जैसे आप इस इंफोग्राफिक में देख पा रहे हैं कि एक स्टॉक इज लाइक अ फुटबॉल, and for any reason, whatever may have been the reason, that football has gotten that force and it is traveling towards its goal, it will continue to do so until somebody creates a hurdle, creates a resistance, just tries to change its course. ऐसे ही stocks का होता है. Stocks, once they start to move in a particular direction with a particular velocity, they will continue to do so, because stocks usually stay in equilibrium, and once they are disturbed from that equilibrium, they go and seek another equilibrium. Until that equilibrium is reached, they will continue to move. तो अगर सपोज कोई स्टॉक है वो 100 रुपए पे है और वहां से काफी टाइम 100 रुपए के आसपास वो घूम रहा था, और let's take an example of, let's say ITC was at about 200 rupees for a long time, and then with the buildup of several things happening in that company, gradually people were moving out, people got bored of the stock, etc. A new momentum came into that stock and it gradually started to rise, and it is continuing to rise. Last year and a half it has been rising, and it is continuing to rise till it will come to a point जहां पर एक new equilibrium establish हो जाएगा for some time. Same you would have seen, let's say in Nifty, for instance. Nifty was at less than 8,000 after COVID fall, and then it went to 18,500 in a straight run, because it was trying to seek a balancing point कि कहीं पर जाके एक बायर सेलर के बीच में एक इक्विलिब्रियम आएगा, और वो इक्विलिब्रियम अभी भी चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है वो, because market is trying to digest the gains that it has gotten in such a short time.
और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्केट विल ट्राई टू गो टू अनदर इक्विलिब्रियम पॉइंट. इट मे बी हायर, इट मे बी लोअर, राइट. तो एसेंशियली आप स्टॉक या इंडेक्स के इंक्रीज ऑफ प्राइस या डिक्रीज ऑफ प्राइस को मोमेंटम एक डेफिनेशन मान सकते हैं उसको. सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या हुआ फिर? मोमेंटम आपने अगर समझ लिया कि व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या हुआ कि आप उस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बेसिस क्या है कि मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये मेरी बेसिस है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए. मेरा स्टॉक गिर रहा है, ये मेरी बेसिस है उस स्टॉक में से एग्जिट करने के लिए. सो बाय व्हाट इज गोइंग अप, सेल व्हाट इज गोइंग डाउन. दैट इज द सिंपलेस्ट ऑफ explanations for momentum investing. So you catch a trend up, you buy it. You catch a trend down, you sell it. You're not guessing. The whole idea about momentum investing is that it is very, very crystal clear in its rules. You will actually see what is happening in front of your eyes being executed in your portfolio. So there is no guessing game. You know, normally investing में क्या होता है, आपने कोई स्टॉक ले लिया 100 रुपए पे, अब वो 50 रुपए आ गया, अब आप गेस कर रहे हो कि पता नहीं वो 100 जाएगा, पता नहीं 20 आ जाएगा, 200 हो जाएगा. That guessing game is not there. You are buying because the stock was going up, and if the stock doesn't go up, you will sell off it, right? So it is very, very intuitive, and it is very in the face, very, very practical. Now this is about one stock or one index. Now we can create a bouquet of such stocks or index. तो हमने सपोज एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, उसमें 20 स्टॉक्स हैं, और वो 20 स्टॉक्स की हमने सिलेक्शन कैसे करी? फॉर ईच ऑफ द स्टॉक्स सर्टेन कंडीशंस हैव बीन मेट. लेट्स से आवर कंडीशन इज दैट इन द लास्ट 12 months the stock should have done at least 50% gain. Let's say this is my entry condition. कोई भी स्टॉक जो 50% से ज्यादा गेन हुआ है पिछले 12 months में, वो मेरा एक फिल्टर है for it to come into my portfolio. Let's say a very rudimentary and crude form of rules I'm telling you. And let's say आपका एक और रूल है कि अगर stock goes below 20-week moving average, I will get out of it. Let's, for very simplicity sake, these are my two rules: entry rule, exit rule. Totally quantitative, totally price based, no guessing, no forecasting, no prediction, but right there it is clear to you. तो जैसे आपने अब इस तरीके का 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया, लेट्स से हमने 5% एलोकेट कर दिया सबको, तो ये जो पूरा पोर्टफोलियो बना, दिस इज अ मोमेंटम, मॉडल मोमेंटम पोर्टफोलियो. This has been created by a formulation of rules which is non-discretionary in nature. By non-discretionary इससे क्या मतलब है कि non-discretionary मतलब मेरी डिस्क्रिशन नहीं है, मेरी चॉइस नहीं थी उसमें कि मुझे ये खरीदना है या वो खरीदना है. मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया था, उस हिसाब से मेरी ये फिल्टर करा, तो मैं ये सिलेक्शन आई है. मेरी चॉइस नहीं है कि मुझे येस बैंक अच्छा लगता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, या मुझे आईटीसी अच्छा लगता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा है कि रिलायंस लेना चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूं. नो, इट इज बिकॉज दीज 20 स्टॉक्स हैव फिट द रूल्स दैट आई हैव डिजाइन्ड, एंड हेंस आई एम बाइंग दैट नॉन इमोशनली. तो उसका स्टॉक का नाम एबीसी है या कोई भी और उसका नाम है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है. अब वो एक कोई ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है. लेट्स से अगर कोई ऐसा स्टॉक आपने सुना ही नहीं उसके बारे में, नाम 1 साल पहले ही मार्केट में आया है, सो ऑन सो फोर्थ, वो भी हो सकता है. तो आप अपने रूल्स उस हिसाब से बना लेंगे कि मुझे को कम से कम इतनी ड्यूरेशन स्टॉक की होनी चाहिए मार्केट में, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए, इतना डिलीवरी वॉल्यूम होना चाहिए. उस तरीके के आप एडिशनल रूल्स भी बना सकते हैं उसके रहो. बट जस्ट टू कीप इट वेरी, वेरी सिंपल, बाय व्हाट इज गोइंग अप, सेल व्हाट इज गोइंग डाउन. This is the essence of momentum investing. चलिए आगे चलते हैं इसमें. तो एक तो आपको मैंने बताया कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करना है.
जो कि अभी रेट ऑफ चेंज की हमने डिस्कशन करी कि रेट ऑफ चेंज क्या है कि आज का रेट वर्सेस एक प्रीवियस डेट का रेट। तो 12 मंथ्स में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 50% रेट ऑफ चेंज हुआ है, या 6 मंथ्स में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ है, 3 मंथ्स में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ है। दीज आर ऑल प्राइस बेस्ड रेट ऑफ चेंज वेज ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम। देर आर, जैसे आपने और फंडामेंटल आपने इन्वेस्टिंग करी होगी, और भी फॉर्मेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग आपने करी होगी, हजारों तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। देर इज नो वन वे। somebody is chasing expansion of margin, somebody is chasing market share, somebody is chasing profit growth. So many different ways of trying to select your preferred group of stocks. उसी तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक तरीके से नहीं होती, ये वेरियस वेज में हो सकती है, बट उसके कुछ कुछ जो मेन यूजेजेस हैं प्राइस बेस्ड, या आप कोई इंडिकेटर भी बेस ले सकते हैं। जैसे RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने नाम भी सुना होगा, आप शायद यूज भी किया होगा। तो वो एक इंडिकेटर है विच गोज फ्रॉम 0 to 100, वेयर टिपिकली अबव 70 you consider it overbought, typically below 30 you consider it oversold. So you have basically a number associated with each stock कि अगर हमने उसका लेट से 14 डेज का RSI निकाला है तो इसका RSI 55 है, इसका RSI 45 है, इस तीसरे स्टॉक का RSI 70 है। ऐसे आपके पास हर स्टॉक का एक RSI नंबर है हर रोज। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बेसिस फॉर यू टू क्रिएट ए डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ RSIs। लेट से मैं CNX 200 पे स्टडी कर रहा हूँ सपोज, तो मेरे पास 200 स्टॉक हैं, टॉप 200 स्टॉक्स ऑफ द मार्केट, और मैंने उसमें एक RSI बेस्ड एक सॉर्टिंग करी। सो आई basically find out the RSI of each of these 200 stocks and I say let me sort it from top to bottom, highest RSI at the top, lowest RSI at the bottom। तो उसमें आ गए 80, 70, 60, 50 ऐसे करके पूरी लिस्ट आ गई आपकी। अब मैं इसमें क्या रूल बना सकता हूं? अब यूजुअली व्हाट विल हैपन, RSI will be high when the stock is higher in momentum, when the stock is in a buy zone. RSI will be low when the stock is getting sold. So RSI could also become a measure of momentum. So I may say I want to select 20 stocks जिसमें RSI जिनकी 70 plus हो. All stocks which have RSI above 70 I want to put in my portfolio, and any stock which has RSI below 70 I want to remove from my portfolio. Let's say this is my rule, और मैंने 20 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। अगर 20 मेरे को मिल रहे हैं 200 में, तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो मे बी आई सेलेक्ट 15 एंड लेट 5 बी इन कैश टिल आई गेट 5 मोर। और सपोज मैंने जो 15 सेलेक्ट किए, कुछ टाइम बाद उसमें से 5 स्टॉक की RSI डाउन आ गई, तो मैं उनको बाहर निकाल दिया, अब मेरे पास 10 ही स्टॉक बचे। लेकिन RSI आपका एक मेजर बन गया, जैसे पहले रेट ऑफ चेंज में प्राइस एक मेजर बना हुआ था, यहाँ पे RSI एक मेजर बन गया। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं, नॉट जस्ट RSI, कोई आप स्टोकेस्टिक भी ले सकते हो, आप MACD ले सकते हो, आप कोई ATR ले सकते हो, आप कोई नियरनेस टू 52 वीक हाई ले सकते हो। लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें आई वांट टू सी के जो आज का रेट है वो 52 वीक हाई से कितना पास है। So there are some stocks which are at 52 week high. There are some stocks which are 5% from 52 week high. There are stocks that are 20% from 52 weeks high, and there are stocks which are 50% from 52 weeks high. तो उसकी भी आपने सॉर्ट करके एक लिस्ट बना ली। तो अंडरलाइंग थीसिस क्या है कि जो स्टॉक 52 वीक हाई के पास है उसकी प्रोबेबिलिटी टू कंटिन्यू मोमेंटम हायर है। दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट यू आर लुकिंग एट। जस्ट लाइक आप पहले कह रहे थे कि RSI अगर किसी की ज्यादा है तो वो स्टॉक इज लाइकली टू रन मोर, रेट ऑफ चेंज किसी का ज्यादा है तो दैट स्टॉक इज लाइकली टू रन मोर। इसी तरह से नियरनेस टू 52 वीक हाई कैन ऑल्सो बी ए क्राइटेरिया फॉर यू टू ब्रिंग इन द स्टॉक्स इनटू योर पोर्टफोलियो, एंड इफ दे आर गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम 52 वीक हाई
गिर रहे हैं स्टॉक तो आपने उनको बाहर निकाल दिया। तो आपका बड़ा एक ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी बन जाता है कि हाउ टू ब्रिंग स्टॉक्स इनटू योर पोर्टफोलियो and how to take stocks out of your portfolio without getting confused by the 50,000 different variables that are in your face. Global macros, लिक्विडिटी इंडिया में आ रही है, जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, गिर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी हर सेक्टर की चेंज हो रही है, कोई एफआई सेल हो गई, किसी में कोई मार्जिन स्क्वीज हो गया, किसी में कोई एफडीए की इंस्पेक्शन आ गई, किसी में कोई यू नो द मैनेजमेंट हैज रिजाइंड, maybe somewhere some product has gone bad. So all those things are basically noise, and the price is actually the only thing that you need to see. Price or these indicators based on the price. So that you must have heard a Gujarati saying भाव भगवान छे। तो उसका क्या मतलब है कि जो भाव है, द प्राइस, दैट इज गॉड, बिकॉज द प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग ऑल दिस नॉइज इनटू इटसेल्फ। तो उसको हम बीबीसी प्रिंसिपल बोलते हैं, भाव भगवान से। वीकेंड इन्वेस्टिंग इज बेसिकली ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीबीसी प्रिंसिपल, वेयर वी से कि चाहे अब जो मर्जी न्यूज आ रही है, आने वाली है, आ चुकी है, या लोगों को इनसाइडर इंफॉर्मेशन है किसी स्टॉक के बारे में, वो ऑलरेडी प्राइस में मोस्टली डिस्काउंटेड होती है। आपने बहुत बार नोट किया होगा, किसी कंपनी का बहुत खराब रिजल्ट आया, उससे पहले ही वो स्टॉक गिर चुका होता है, बिफोर यू एंड मी कम टू नो अबाउट दैट रिजल्ट, द स्टॉक हैज फॉलन। Many times we are finding the stock is continuously rising. Nobody knows why. But then there will be some announcement about a result, about some merger, about some bonus, about some special dividend, something, you know, really positive that has come around, about some government policy. वो यूजुअली हमें लेट पता चलता है, बट प्राइस में पहले से ही इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्राइस जो है वो एक फॉरवर्ड एडवांस्ड इंडिकेटर है ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। मोस्टली, I wouldn't say 100%, but there is very high probability that a big event in any stock will get discounted to a large extent before that event is revealed. And you can pick up last 50 years of data and look at any stock where a big event has happened, and you will find this to be true. तो अब आपने सीख लिया कि मोमेंटम को मेजर कैसे करना है। अब इसमें होता क्या है कि एक आपने सुना होगा, ट्रेडिंग में ये बड़ी यूज होती है चीज के, यू नो, कीप योर लॉसेस स्मॉल एंड लेट योर विनर्स रन। वैसे तो इन्वेस्टिंग में भी इसको करना चाहिए, बट कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग में कीप लूजर स्मॉल को नहीं रखा जाता। लोगों को लगता है कि जितना स्टॉक गिरेगा उतना अच्छा है, क्योंकि मैं और ले लूंगा फिर। लेकिन काफी बार ये होता है कि जितना स्टॉक ज्यादा गिरता है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो वापस नहीं आने वाला। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप हिस्टोरिकल स्टॉक की लिस्ट को खोल के देखेंगे तो हजारों ऐसे स्टॉक्स हैं जो कभी वापस ही नहीं आए। और ये बहुत बड़ा सर्वाइवरशिप बायस एक जिसे कहते हैं एक फिनोमिना है कि हमें वही दिखता है जो विनर है। अब हमें वही दिखता है कि आयशर मोटर्स और इतने साल में इतना हो गया, और यू नो टाटा एलेक्सी इतने साल में इतना हो गया, और वहां पर आपने लीवर खरीद लिया होता तो इतना हो जाता, आईटीसी आपने 20 साल पहले खरीद लिया तो इतना हो जाता, बिकॉज दीज आर दीज स्टॉक्स दैट हैव सर्वाइव्ड। So there is a huge survivorship bias when we talk about these stocks, because we are not talking about the hundreds and thousands of stocks which could not make it. तो survivorship bias एक बहुत बड़ा bias है मार्केट में, जो कि आपको इससे ब्लाइंड एक ब्लाइंड आपको करता है कि yes, everything looks good in the market, so you can buy anything, और most stocks will do well. स्टॉक्स में गिरने की क्या बात है, सब कुछ बढ़ जाते हैं बाद में। ऐसा नहीं है।
अगर आप 1990 का 2000 का निफ्टी की कॉम्पोजिशन, सेंसेक्स की कॉम्पोजिशन निकाल के देखेंगे, उसमें से आधे से ज्यादा स्टॉक तो खत्म हो चुके, whether it was Unitech, whether it was JP Industries, whether it was Yes Bank, whether it was India Bulls, whether it was Suzlon, ये सब नाम मैं आपको निफ्टी कंपोनेंट्स के बता रहा हूं. तो because we want to celebrate only the winners and forget about the losers, so deep losses are the biggest reason why your portfolio will fail. क्योंकि डीप लॉस से वापस आना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप सड़क पे भाग रहे हैं और आप गड्ढे में गिर गए, अगर आप 3-4 फुट के गड्ढे में गिरोगे तो आप उससे निकल के फिर से भागना शुरू कर दोगे. लेकिन अगर आप 20 फुट के गड्ढे में गिरोगे, आप नहीं निकल पाओगे, आप उसी में रह जाओगे. दैट इज एग्जैक्टली द सेम इन द मार्केट्स, कि आपको गड्ढा छोटा रखना है. और उसको छोटा रखने के लिए क्या करेंगे आप, कि जब थोड़ा सा भी अगर आपको लॉस आया, आपको लगा कि भाई ये तो मैंने स्टॉक लिया इसलिए था कि ये ऊपर जा रहा है, बट ये नीचे आना शुरू हो गया, तो आपके पास सामने आपको प्रैक्टिकल एनेक्डोटल एविडेंस है आपके पास that this stock is not performing as it was supposed to be, and hence I don't want to maintain my relationship with it. Now what is happening in the market? People study so much about a stock, they will do all kinds of research on it, they will talk to 50 people about a stock, they will eat and use its products, they will fall in love with that stock. And then whether it is 4 feet, 40 feet, 400 feet, they are totally in love with that stock and it is not coming out. You are not coming out of that hellhole. So basic principle, clear identification, how you will buy stock, how you will sell stock, how much you will buy stock, how much you will stock the allowed to go against you, right? And these are the 4 sort of principal questions that we have always, remained the forefront of momentum investing for us. What to buy, when to buy, how much to buy and when to sell. मैं फिर से बोल देता हूँ, what to buy, when to buy, how much to buy and when to sell. ये 4 क्वेश्चन आपके पास हमेशा आंसर्ड होने चाहिए. एक्चुअली में तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो ये आपके पास हमेशा आंसर होना चाहिए. क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग. इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट शूटिंग इन द डार्क. आपने कोई स्टॉक खरीद लिया 100 रुपए पे, अब वो 50 रुपए, अब आपको पता ही नहीं है कि उस कंपनी में अब क्या होना है. अब आप होप कर रहे हो कि मे बी इट विल गो बैक टू 100, मे बी इट विल गो बैक टू 200, मे बी इट विल कम टू 20, पता ही नहीं कुछ. तो इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती है, वो तुक्केबाजी होती है. वो कभी कभी किसी की चल जाती है, and then once in a while some big man will make a few 100 crores by just sitting on some winner, and then people will say okay, buy and hold is the best way of investing. Whether they can do it themselves or not, that doesn't matter. Anyhow, let's come back to this. तो क्या होगा कि जब आपकी ऑब्जेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन होगी, तो हर साल में 2 साल में जैसे जैसे बिजनेस साइकिल ऑफ द मार्केट चलेगी, आपको कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो बढ़ते ही चले जाएंगे, ड्रामेटिक रन होगा जिनमें. और वो आपको क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप मोमेंटम मेजर करके कोई चीज ले रहे हो. तो जिनमें हाई मोमेंटम है उसी में प्रोबेबिलिटी है कि मल्टी बैगर बने हो. आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए. एक स्टॉक है, वो 100 रुपए पे है, और लेट से उसका 52 वीक हाई 150 है और 52 वीक लो 50 रुपए है. अब वो स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया 100 रुपए से और वो 150 पे आ गया. आई कैन गारंटी यू 90% पीपल विल गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक. व्हाई? बिकॉज सो फार द हिस्ट्री ऑफ दैट स्टॉक इज कि वो 150 रुपए पे 52 वीक हाई बनाया हुआ है उसने. तो जहां वो 150 रुपए आएगा, 90% लोग उससे बाहर हो जाएंगे कि भाई इतना ही जाता है स्टॉक, ये इससे ज्यादा अब क्या जाएगा. But what is a multi-bagger? A multi-bagger is a stock which will go multiple folds above its previous high. Let's say its previous high was 150. Now stock is going from 100, 200, 300, 400, 500, 1000.
वो 100 का 1000 रुपए जाने वाला एक घोड़ा था जिसको आपने 150 पे कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर लग गया कि 150 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। यू डिड नॉट अलाउ दैट स्टॉक टू टेल यू कि मैं 150 के ऊपर जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आपने अपना दिमाग लगा दिया बीच में कि 150 रुपए के ऊपर तो ये जाएगा नहीं, तो मैं बेच देता हूं उसे, जबकि वो तैयार था 1000 रुपए की तरफ जाने के लिए, अगर आप सुनते उसको तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक्स आपको स्टोरी सुनाते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो। जस्ट लाइक इन योर रियल लाइफ, you have to be a good listener to absorb the knowledge, right? आप बोलते रहेंगे तो आप कभी भी नॉलेज गेन नहीं कर पाते हो, बट आपको सुनना पड़ता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपको सुनना पड़ता है कि स्टॉक मुझे क्या बता रहे हैं, ये स्टॉक मुझे क्या बता रहा है, ये स्टॉक मुझे क्या बता रहा है। आई नीड टू बी अ गुड लिसनर, लेट द स्टॉक टेल द स्टोरी, देन आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू होल्ड इट और नॉट। बट stock was telling you a different story and you said no because I think that 150 is too much for it, I should sell it. तो आपने अपनी ईगो बीच में ले आए, स्टॉक जाने के लिए तैयार था। खैर, तो ऐसे न्यूमरस स्टॉक्स, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 7 years with the public portfolios and about 11-12 years in my own personal portfolios. तो ऐसे हर 2 साल में ऐसे बहुत सारे स्टॉक आते हैं विच जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप। जैसे टाटा एलेक्सी आया था पीछे, टनला सिस्टम आया था, आरती ग्रुप के स्टॉक्स आए थे, ग्राफाइट रेन 2018-17 में आए थे, अभी पीछे अडानी स्टॉक्स भी आए थे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो essentially आपको in a way they will surprise you on the higher side and you want that surprise to come into your portfolio. Just because some stock is running and you are not able to fathom why it is running should not be the reason why you should not be holding. जैसे ही जब स्टॉक गिर रहा है तभी भी आपको वो कैच द फॉलिंग नाइफ नहीं खेलना चाहिए। स्टॉक जब तैयार है ऊपर जाने के लिए तब आपको खेलना चाहिए, और मैं आप इसके बारे में आपको और आगे शायद समझाऊंगा कुछ स्लाइड्स में। तो ओवरऑल क्या होगा इस पोर्टफोलियो में, आपके पास 20 स्टॉक होंगे या 25 स्टॉक होंगे, जैसा भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है। कुछ स्टॉक्स भागते चले जाएंगे, कुछ स्टॉक्स में आप छोटे छोटे लॉस बुक करते चले जाओगे, तो देयर विल बी मेनी स्मॉल लॉसेस बट फ्यू लार्ज विनर्स। तो वो जो मैथ होगी उस सबकी, इवन इफ लेट्स से आपने 100 ट्रेड्स किए साल में, 50 go right, 50 go wrong, but the right ones will make you so much money more than what the wrong ones will lose you. Overall, you will make money. That is the whole idea about doing it quantitatively in this fashion. तो जैसे मैंने कहा कि मोमेंटम के बड़े इंडिकेटर्स, हाउ टू मेजर मोमेंटम बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग में डिवाइड हो जाती है। तो एक स्टाइल है रिलेटिव मोमेंटम, एक स्टाइल है एब्सोल्यूट मोमेंटम, और एक ये गैरी एंटोनाचिनी जी ने डिराइव किया था डुअल मोमेंटम। सो विल टॉक मोर अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट व्हिच आर मोर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक्स। तो एब्सोल्यूट मोमेंटम, जैसे कि द नेम सजेस्ट कि वो एक स्टॉक का मोमेंटम एब्सोल्यूट वे में मेजर हो रहा है। मतलब आपने स्टॉक का मेजर किया, लेट्स से लास्ट 12 मंथ्स का रेट ऑफ चेंज, वो उसी स्टॉक का रेट ऑफ चेंज है, तो इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। उसकी बेसिस पे आपने उसको सेलेक्ट किया या नहीं किया, दिस इज एब्सोल्यूट मोमेंटम। उसी और एक रूल की बेसिस पे आपने उसको पोर्टफोलियो से निकाला एंड यू केम टू कैश, दैट इज एब्सोल्यूट मोमेंटम। बट इफ इन दैट पोर्टफोलियो यू से आई हैव 20 stocks and there will always be 20 stocks in this portfolio regardless of where the market goes, I will have the top 20 relative to each other. तो 100 अगर सपोज मेरे 200 CNX 200 200 का अगर मेरी लिस्ट है और मैं उसमें कह रहा हूं कि मेरे को बेस्ट RSI वाले स्टॉक चाहिए, चाहे सबकी RSI 50 से कम हो, लेकिन you are saying I want the best 20 relative in that particular group, then you will get those top 20. You will not be sitting in cash. Whereas in absolute momentum, if you had said I only want stocks that are above RSI 70, otherwise I don't want any stocks, you would be sitting in cash.
That is mota moti the large difference between relative momentum, which always remains invested and is relative to its peers, whereas absolute momentum, which is based on individual performance of that stock and can remain in cash at times. This is the large difference. अब आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. नाउ forecast performance of the asset management and sector based on my own assumptions. Value या fundamental investing में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मेरा forecast है कि रिलायंस में ये होगा, ये ऐसे इसके एसेट्स परफॉर्म करेंगे, ये इसकी अर्निंग्स आएगी, ये सेक्टर की ग्रोथ होगी, ये मेरी अजम्पशन है. कोई बता नहीं रहा आपको ये होएगा, आपकी अजम्पशन है कि ये होगा, या आप फोरकास्ट कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, स्टॉक इज टेलिंग मी दैट इट इज गोइंग अप, हेंस आई एम बाइंग इट. You are not making any prediction. You are just absorbing what the market is telling you. Right? फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने वैल्यू ढूंढ ली, बहुत वैल्यू है स्टॉक में, बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट उस वैल्यू का आप क्या करोगे जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा. सपोज आपने वैल्यू ढूंढी और स्टॉक चला ही नहीं 10 साल तक, तो आप उस वैल्यू का क्या करोगे, जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा आप उस वैल्यू को लेकर अनलिमिटेड तो बैठ नहीं सकते. और यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस मूव कर रहा है तभी आप ले रहे हैं, तो आपकी जो एफिशिएंट यूजेज ऑफ कैपिटल है वो हो रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हो रहा है. योर कैपिटल इज गोइंग टू स्टॉक्स विच आर लाइकली टू मूव, सो यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग योर कैपिटल. फिर कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग में एक ये टर्म होती है विजीविग, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट. ये आईटी में जो आप लोग होंगे तो आप समझ जाएंगे फटक से. तो कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग में आप गेस करते रहते हैं कि मैंने अब 100 रुपीज का स्टॉक ले लिया, अब पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, गेस है. लेकिन मोमेंटम में वो स्टॉक चल रहा है इसलिए आप ले रहे हैं, राइट. तो कोई लैग नहीं है आपके प्राइस एक्शन और स्ट्रेटेजी में, मतलब देयर इज नो गेसिंग देयर. अच्छा, फिर कुछ लिक्विडिटी फ्लो रिवर्स हो गया, कुछ इमर्जिंग मार्केट में से फ्लो चला गया, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, सारे स्टॉक्स गिर गए, तो कोई भी अच्छा स्टॉक था, कोई बुरा स्टॉक था, सब डाउन आ गए. तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि वैल्यू थी नहीं थी, क्या हुआ, सब गिर गए. और यहाँ पर एक्चुअली में प्राइस मूवमेंट ही डिसाइड कर रहा है. तो अगर आप स्टॉक गिर रहे हैं तो आप वैसे ही बाहर हो रहे हैं उनसे, राइट. तो इसका जो समरी निकलती है ना, वो ये निकलती है कि अगर आप कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन अ वे आप ये कह रहे हैं कि मार्केट को नहीं पता है हाउ टू प्राइस द स्टॉक, आई नो बेटर देन द मार्केट, आई कैन लीड द मार्केट इज स्टूपिड, आई नो मोर देन द मार्केट. ऑल दीज मिलियंस ऑफ पीपल and everybody has the same information, are not able to price the stock right, but I can do it better than them. That is the claim in conventional investing. Whereas in price momentum behavior, you are saying bhao bhagwan che, I am going to follow the market, I am going to allow the stock to tell me the story. If the stock wants to go up, I'll follow it. If the stock wants to come down, I'll get out of it, but I will not try to preempt the stock. That is the major difference between the two styles. Now I will I think already I am about 40 minutes into it, so quickly in next 10 minutes I will go through some of our popular strategies, and then in the next 10 minutes we can do some Q&A, and in the next session I'll also teach you how to create a momentum strategy. So MI India Top 10 is one of the very popular strategies. Now this strategy is a low churn 10 stock strategy which only invests in nifty stocks. So 10 stocks हैं, निफ्टी के स्टॉक्स हैं, एक बार हम उनको खरीदते हैं और फिर एक महीने तक कुछ नहीं करते हैं.
एक महीने के बाद उसमें एक रीबैलेंस होता है. अगर कोई स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो वो बाहर हो जाता है, नहीं तो एक न्यू स्टॉक उसमें अंदर आ जाएगा. दैट इज ऑल दैट यू आर डूइंग. सो यू नीड 2 minutes per month to do this, and this is how it has performed since 2016. कुछ इसमें पीरियड बैक टेस्ट का है, कुछ पीरियड लाइव का है. Total returns 219% since 16. Why we are taking 16? Because our firm started in 2016. Nifty 50 index since then is up 130. So 100 would have become 230 in Nifty, whereas in this strategy it became 320. So there's a huge outperformance. Because why is this happening? Why is the CAGR higher than Nifty? Why is the drawdown lower than Nifty? Because let's say you had a stock like Yes Bank. Yes Bank was at 400 rupees. It came down to 20 rupees. By the time the stock was coming down from 400 to 20, our strategy was out of it much before, maybe from 400 to 250, it was out of it. But Nifty continued to have Yes Bank as a constituent of Nifty till it became 20 rupees. So Nifty is losing ground because of Yes Bank, because Nifty is not changing. Nifty is going to change once in 6 months. So you have to bear the underperformance of weaker stocks in Nifty also when you buy Nifty. Whereas here, what you're trying to do is to have the cream of Nifty, the top 10 stocks at any point of time which are performing, to lead your portfolio. So, in that sense, if Nifty is in momentum, you'll have the highest momentum stocks in the top 10 stocks in your portfolio. If Nifty is coming down, you'll still have the best outperforming stocks of Nifty in your portfolio at that particular time. So this is the makeup of MI India top 10. Let me, I have skipped some slides. I'll quickly go through this. So let's say we want to also see the top gainers here in MI India top 10. So let's say ITC. Now ITC, we did not buy it for the several years that it was in limbo, but we bought it once the momentum matched our entry criteria. We bought it somewhere near 250. And we are currently holding it. It is almost near 400. So we are not bothered about how it will top out, when it will top out. Whenever it will top out, it will tell us when to get out. We are happy to wait for, when it will get out. Another one is Coal India. We entered at 167. We are holding it here. We are patiently holding it. There's not much of churn in this strategy. Very, very slow strategy, but it will keep you out of harm's way. It will not allow a stock to be bought here and held on for, a drop of 60% on it. It will not do that. It has some leverage to allow the stock to move up and down, but it will not allow big losers to stay in the strategy. Similarly, another strategy is MI NNF 10. So there is an index called Nifty Next 50, which comes below Nifty. So 50 top stocks just below Nifty. So these are the stocks which have the potential to go into Nifty at some point in their life. And here also we choose the top 10 Nifty Next 50 stocks out of the 50 stocks, and we ride our portfolio on it. Over this last 6-7 years, it has done 264% versus 135%. A very good CAGR versus the Nifty 50 index. And again, once a month only, you need to rebalance this strategy. I hope I can go forward here. So some top gainers are Adani, which came in very early 2021. We lost some ground here, but still we made good profits on Adani Transmission. And another stock was also Adani Enterprise in this portfolio, where we entered near 1,000 rupees and exited much before its top out, actually, because of this fall, about 234%. So very, very good gains came in this portfolio because of the Adani Group, if you had stayed invested since a couple of years. MI20 is another very good portfolio, which is 20 stocks made out of mid and small cap 400 stocks only. So the top
400 mid and small cap stocks are the universe, and just see the kind of outperformance it has had. 334% in the same period versus 153% on the index. It allocates 5% to each entrant. And this is something that gets rotated every week. So there's a weekly rebalance on this. And we have a much lower drawdown and a much higher CAGR than the index. A very, very good, robust portfolio here. Again, you can see some gainers from here. CG Power from last year is currently in the portfolio. Mazgaon Docks, bought it early, still holding it, so on and so forth. Another very popular strategy is MI35, which invests only in small cap stocks out of the small cap 250 universe. So the only 250 stocks it will consider to buy is from the 250 universe. Again, we see very, very good performance, almost 400% returns versus 133% on small cap 250 index, and a much, much lower drawdown, especially when it came to COVID lows here. Again, but this is very, very well diversified. So 35 stocks, diversification of small caps, because small caps can be very volatile. So you need more diversification to make sure that your portfolio is not rocked by any volatility. So top gainers at Tri-Turbine. We bought this near 200, still holding it at 336. See, the beauty of momentum investing is that when stocks are rising, you're not worried about them. You're worried when stocks are falling, which is completely opposite of the conventional wisdom. So momentum investing is, I will say, it is simple, but it is not easy. It is very simple to say, to have a great health, we should get up in the morning, go for a 5-kilometer jog, and, everybody is healthy all around you. But is it easy to do? It is very simple. But is it easy to do? No. And hence, everything which is simple but not easy to do is something that will deliver great results if you are able to do it. Karur Vaisya Bank is another one. We entered at 61 rupees. We are holding it. It's currently at 98. So stocks will come to you on your own. I mean, how many stocks can you research? How many stocks can you follow by deep diving? If you have that kind of a great research ability, then of course, maybe this is not for you. But if you are, busy in your profession, busy in your life, and you want to spend a few minutes only on the market, yet get, market beating returns in most of the years, then this could be one thing that you would consider. So I want to also bust some myths that are around momentum investing. Some of you may have heard. So one of the myths is that it is like short-term trading. It is not investing. So that is a total, BS. We have an average hold of 3 to 6 months on most of the stocks, and several stocks we even hold for, 1 to 2 years. So it is not short-term by any nature. Yes, it is not very long-term either, but the short-term is not there. Another myth is that, the edge will go away with more people will do it. So there's 200 years of research available in the US market. All kinds of algorithms are running on it. That edge has not gone away. The momentum investing remains the best format of, factor investing that is available there. It beats all other kinds of investing. Third myth is it is too simple. How can it be, successful? So again, as I said, about this anecdote about going out and jogging, it doesn't mean that if something is too simple, it doesn't work. That is in our mind, that we think that if something is complex, only then it should work. तो ये एक हमारे मन की एक वहम है कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तभी आपको अच्छा लगेगा. अगर कोई मतलब एनालिस्ट आके बड़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको सिखा देता है कि भाई कैसे ये कंपनी परफॉर्म करेगी और ये 4 वेरिएबल्स होंगे तब जाके ये आउटकम निकलेगा. Nobody knows what is going to happen tomorrow. I mean, for anybody to predict 5 years, 10 years is ludicrous. We are living in a world of disruption. आपको आज नहीं पता कि आपकी कंपनी कल लास्ट करेगी कि नहीं करेगी, अगले साल होगी नहीं होगी. ये सब एक प्रोजेक्शन है जो कि मतलब जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. So anyhow, so this is the end of my presentation. We have a user code of WKI Dhan20. If you wish to subscribe to any of these strategies, you can go to weekendinvesting.smallcase.com and use this code there.
I'm sure the link will also be provided below. So if you wish to have any queries about any of these strategies, please write to us, support@weekendinvesting.com, and I'll be happy to take that query. And for now, we have about 10 minutes to take on any query that we have. I'll also go through some chats which may be having some queries. Prateek says, thank you, sir, for having this webinar. Thank you so much, Prateek. Anil says 52-week high can work as a resistance too. Yes, it can be resistance, but the evidence is that 52-week high, if a stock is at 52-week high, the probability that is a higher number of stocks will go higher is very high. So that's how you could look at it. Mr. Mishra says, how much fall should trigger stop loss? So it is basically a way of designing the system. Somebody could say that, if I stocks falls 20%, I'm willing to take a stop loss. Somebody may say if it stocks falls below 100 moving average, I'm willing to take it out. Somebody may say I will take out a stock if it falls below average true range of last 10 days. So there is no one plan that is available on the shelf. How to take exit is again the same thing. I mean, there are so many ways of taking exit. In relative momentum, you are taking exit because other stocks are performing well. In absolute momentum, you are taking exit because your stock has breached some exit criteria. That exit criteria could be price based, it could be some indicator based, it could be some moving average, it could maybe some 50% below 52-week high, it could maybe average of 52-week high and low. It could be anything that you design your strategy around. Shiv Kumar says, thank you for the session. What is the criteria used by weekend investing portfolio selection? So we have about 11 portfolios and not using the same criteria for each portfolio because each portfolio has different criteria catering to the different style of investing. I would say the nature of the subset of stocks. So it would be a bit different for small cap stocks, will be a bit different for large cap stocks, so on and so forth. Thank you so much, Alok sir. Sure. This was a very insightful session that you had. There are two more questions that our user has. Yeah. So one of the question. So I can see the question from Shiv Kumar. Does this provide suggestions and we manage the portfolio balance, or is there a tooling support? So there are two ways of doing this. So if you come through Dhan, which is affiliated with smallcase.com, you will only need to click the portfolio rebalance. So let's say you come into the portfolio, you subscribe to it, you get a list of, let's say, 20 stocks that you want to allocate to. Now let's say you allocated, let's say 2 lakh rupees. Now, a month later or a week later, depending upon the strategy, you will get a rebalance update. It may say that out of these 20 stocks, you need to remove one and a new one needs to come in. So you will just do one click and automatically that stock will go out of your portfolio from your Dhan account and a new stock will come into your Dhan account. So that's all that you need to do if you are following the small case model. Any other query? One query is Dow theory is true. So Dow theory is a established theory, and all these theories are essentially probability driven. So any theory it holds true as long as you are seeing it with the perspective that it's a high probability event. So if you are saying, let's say, what is the probability that a stock which goes above 200 DMA goes, much above it? If you will take a sample size of 500 stocks and do this study, you will find that the probability that a stock does well above its 200 DMA is much higher than when it is below 200 DMA, for instance. But there is no absolute guarantee about it, that if this happens, then this has to happen. There is no guarantees in the market, actually.
Prateek has one question. How do you handle Adani case? So we have handled Adani case like any other stock. We bought them much earlier and then we exited them. Yes, in the Adani case, there were some down circuits, but then as and when the circuit opened, we exited them. Still, we made a lot of money on them. Can we see the list of assets in NG 50/50? Good question, Jaspreet. So NG 50/50 is basically a very simple free strategy where we are investing in two ETFs. So one is a gold ETF and one is a Nifty ETF. And essentially you are doing a monthly rebalance of 50% each on both these ETFs. The strategy is just there so that you don't have to recalculate it. Otherwise you can do it yourself also. And what we have seen evidence over the last 20-30 years is that whenever you will find periods when Nifty is not performing, in INR, gold will be performing at that point of time. So Nifty ETF plus gold ETF combined gives you a fantastic outcome, which is very, very smooth. Yes, the returns may be slightly less than Nifty, but your outcome is extremely smooth. This is probably one of the best methods of parking your money, for some period if you want to park your money. Manoj Prabhakar has a question regarding weekly rebalancing causing short-term capital gains tax. Any insights on that? So stocks that will be sold off in less than 1 year will attract short-term capital gain. Stocks that will be sold off after 1 year will get long-term capital gain. There's a gap of 5% between the two. As long as you are making excess returns on any strategy, I don't think that 5% makes a much of a difference. And also a lot of times, because you are booking short losses and long profits, a lot of times you have accumulated losses also that you take carry forward. So that also gives you an advantage at times. So taxation has not been an issue in terms of how the momentum investing post taxation will perform out. Thank you so much, Alok sir. That was a very insightful session and we have learned a lot, and our attendees are really happy. There were a few more questions that were there, but yeah, that was all. But yeah, I would like to share to all the attendees, Alok sir has already shared that when you invest in Weekend Investing, you would get a discount for 20%. The code for that is WKIDHAN 20. So you could go to, and you could directly invest from our app as well. Let me write the code in the comment section so that the people can directly use it from there also. Thank you so much, sir. I was just going to do that only. Yeah. So this was all for today. All right. I hope everyone has learned a lot from Alok sir's basics on momentum. All right. Thank you so much. Thank you so much.